Miss Benazir, who is a 28-year-old female, and she presented to us with a history of uh, 3 years history of diagnosed case of obsessive compulsive disorder. She presented to a number of psychiatrists in various tertiary care centers, and she is receiving both psychological and pharmacological treatment for past 3 years since the time the history was she started having symptoms of obsessive compulsive disorder. Most of the symptoms are consistent, and despite taking the treatment, there is no resolution, and the symptoms are still almost the same. So she came with the distressing situation where she was adamant that she wants to quit all the medications, and now she wants to get off all the medication and just try to take the treatment on its own, on her own, and want to get well on her own. She presented with the symptoms that she is having multiple obsessional thoughts, images, ruminations. She also have obsessive psychomotor retardation. She also complains of some compulsions related to a ritualistic behavior when she has to go out of the house. She also have compulsions related to the washing, contamination, and some compulsions related to repeating other things like सर in kitchen when she is cooking. हाँ बोलो. सर थोड़ा सा जरा आइस प्लीज नहीं, मैं इंक्रीज आहिस्ता बोलूंगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा. अच्छा, ओके सॉरी सुनते जाओ. Okay, so for past 3 years time, she received multiple SSRIs, including fluoxetine, a trial of 60 milligrams per day, then escitalopram, a trial of 30 milligrams per day, and a paroxetine, a trial of 75 milligrams per day was given to her, along with some antipsychotic augmentation strategies which were implicated in past treatment. She has a strong family history of obsessive compulsive disorder and bipolar disorder, but unfortunately, I was not able to take the details of the family history because of the shortage of the time. Pre-morbidly, she was a very intelligent, very good student. She passed her intermediate with very good marks. She wanted to be a doctor, but before she was preparing for the examination to appear in MD CAT, she had these symptoms started, and then her studies were compromised. Her functionality is at present significantly impaired, and global assessment of functioning, I can score them around the score of 40. Past history, personal history, and other associated components in the history were some of them were missing. On mental state examination, she's a young girl sitting comfortably on the chair. The repo and eye contact was established and maintained. There are no signs of self-neglect. However, I could see various whitish spots on her hands. Her nails were brittle, and it appeared as if she was washing them very frequently. There was also some psychomotor retardation observed. There are obsessions and compulsions, obsessive phenomena, thoughts, images, impulses, and other symptoms are persisting. At present, she also complains of obsessional phobias and obsessional impulses. She is not having any delusions, hallucinations, and her cognitive functions appears to be within normal range on an informal assessment. Her insight is intact and present. Overall, my assessment is that my first diagnosis is obsessive compulsive disorder. The second diagnosis I am considering at this point in time, although the points are not very much in favor of my second diagnosis. However, I am considering trichotillomania, as she is having some impulsive behavior, and also considering some organic problems. However, I was not able to gather enough data to support my other substantial differential diagnosis.
At present, I am not able to ascertain the precise predisposing factor in her history. However, the predisposing factor, one of the predisposing factor, a strong family history of psychiatric morbidity is there. The precipitating event was the examination stress, and the maintaining factors include some of the factors associated with her personality and also some factors related to the psychosocial stresses in the family where she is living in a joint family system and she has only one bedroom shared with three family members and a washroom also shared by the three family members, including her father, mother, and another sister in the house. The management strategy is to make sure that I evaluate and assess her and go for a relevant investigations, like she is on medication for significant period of time. So I will go for the CBC, platelet count, urine examination, liver function test, renal function test, and if necessary, I will go for MRI brain as well to rule out the organic pathology related to OCD. Uh, as far as the medication is concerned, as the trial of three SSRIs have already been given, so I will try the fourth SSRI, fluoxamine. Starting dose would be 50 milligrams per day, and I will gradually push it up to 2 to 300 milligrams per day over the period of next 6 to 8 weeks. If there is a need, I will try to augment fluoxamine with beta blocker or antipsychotic or a benzodiazepine as it will be assessed and then details are taken from the patient and overall outcome can be assessed. Psychological management, I will go for some cognitive behavior therapy related to OCD. Also, I will go for IPT and behavioral activation therapy. Prognosis, short-term prognosis is relatively compromised as now she is adamant to stop all the medication and want to try on her own to get well. However, I will try to convince her to initiate the treatment, both psychological and pharmacological management, and then I hope that long-term prognosis would be good. Uh, that's my presentation. हाँ जी, ये 5 मिनट में प्रेजेंट किया, पूछो सवाल। कोई भी नहीं। Sir, I am Dr. Ikra. जी। Assalamu alaikum, sir. I am Dr. Ikra Shakur. Sir, जी जी I have a रता। question. Yeah. Sir, इसमें formulation में sir आपने head injury या कोई infection या fever इस चीज के बारे में बात नहीं की while presenting history. So in case of OCD, do we need to mention it or it is not significant to talk about head? Will talk about head injury, any history of infection or fever in the childhood to rule out any organicity? अगर आप pandas की बात कर रहे हैं तो yes, because of the shortage of the time, I agree. I was considering pandas associated with OCD. However, because I was having shortage of time and I tried to get as much information from the patient as possible, I never had any objective account or a family member with her. So I was not able to ascertain whether she was having some symptoms earlier in the childhood or there was some pre-morbid symptoms which were there. So I apologize. I was not able to comment on it. So that was one of the reasons why I never kept as one of my differential. But yes, this is an important area. So to save myself and till the time I won't be able to get the appropriate account from the parents and the family members, I am considering to get an MRI done to rule out the possibility of organic problems. Thank you, sir. जी नहीं सर नहीं मैं कैंडिडेट हूँ हाँ any other question? Can you please elaborate the psychological therapies that this patient has been given? As you, when you started, you said that patient has been taking some sort of psychological as well as pharmacological treatments. Right. So
as far as the information is concerned, uh, she mentioned to me that she was given some psychological treatment. The precise detail of the treatment, as far as what kind of the psychological treatment was provided to her, she was not able to provide me this information. As you people were sitting there, and when I was asking about the psychological intervention, so examiners are sitting with me. So I tried to get the information, what kind of the psychological treatment she received in the past, but she was not able to give me an appropriate answer. I assume, because most of the time when the OCD is diagnosed, cognitive behavior therapy is the first line treatment in this kind of strategies. So I am assuming that she was given some cognitive behavior therapy. However, as there is no record available as far as the paperwork is concerned, or history sheets, or some hospital charts, or any other slips were available to me. So I am a bit cautious about committing what kind of the therapy she received in the past, psychological therapy. But she was hospitalized for at least twice during these 3 years. So I am assuming that, and she was hospitalized for more than 6 weeks each time. So I'm assuming that she was given cognitive behavior therapy in some kind of a tertiary care center. Are you satisfied with the answer or not? Can I ask a Yes, sir. question? सर आपकी Sir, आवाज नहीं आ can रही। you please unmute yourself? आपने सर को म्यूट कर दिया। मैंने नहीं किया। मुझे म्यूट किसने कर दिया? अच्छा, I am a candidate, so you can ask me any question you want to. Yes, please go ahead. सबसे पहले तो आपने थोड़ी देर के लिए फॉर्मुलेशन प्रेजेंट की है, तो अब एग्जामिनर के पास टाइम ज्यादा आ गया आपसे क्वेश्चन करने के लिए। पहली बात मैं तैयार हूँ ना, मैं एग्जामिनर के सवालों के जवाब दे रहा हूँ ना। उन्होंने पूछा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, अच्छा, प्रीवियस हिस्ट्री, ओके, तो मैं दे रहा हूँ। हाँ बताएं, पूछें। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना लंबा उनका ओसीडी का कोर्स था और प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशंस भी रही हैं, तो आपने एमडीडी को कहीं रूल आउट क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता कि साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी में जीएडी और एमडीडी को आपको रूल आउट करना चाहिए था? Okay, so as both of you were the examiners who were just sitting with me when I was trying to assess the patient, I tried to rule that out. On mental state examination, I asked all the relevant questions related to mood, including helplessness, hopelessness, worthlessness, guilt feelings, suicidal ideation, and substance abuse. And I was not able to get any significant account from the patient. However, yes, these are important areas, and as far as I'll be able to get an account from the family members, I will definitely dig more information related to this, and will try to rule out major depressive disorder as one of the comorbid diagnoses in obsessive compulsive phenomena in her case. But considering again the shortage of time, I apologize for that. But because of the shortage of the time, and because of the non-availability of any family member with the patient, I was not able to confirm it. Okay. Can you elaborate the role of ECT in treatment of OCD? ECT and OCD. Usually, as far as most of the research is considered, in most of the cases, ECT have no significant impact on obsessive compulsive disorder. There is one meta-analysis which was conducted in 2007. There was another available in 2019. Both, and one of the Cochrane reviews, they all suggest that ECT is to be considered as an augmentation strategy for obsessive compulsive disorder when it is comorbid with other symptoms like of major depressive disorder, of where when you are not sure whether the obsessional phenomena is associated with some psychotic overlay, and those kind of comorbid conditions, ECT is one of the option. The primary
treatment strategy, ECT as a primary treatment strategy in the first and foremost cases. Most of the studies don't suggest it. So I am not considering ECT at this point in time, as I perceive that the treatment, whatever was given to her in the past 3 years' time, we still should try more of the augmentation strategies before we think of giving her ECT. Okay, you talked about psychotherapy and you talked about CBT and IPT. So are there any other psychotherapies that we can consider, and what guidelines are you considering while telling us these? Okay, so usually whenever uh, a case of obsessive compulsive disorder presents, ideal situation is that we should try to assess the intensity and the severity of the OCD. That we can do with two scales which are available. So if the patient is bilingual and he is able or she is able to understand English language, I will try to use a Yale Brown obsessive compulsive inventory. However, as the patient, in this case, she is bilingual, so we can go for Yale Brown obsessive compulsive inventory. The second option is Padua, a scale of OCD, which is available in Urdu as well. So that is the second possibility. I can administer it to measure the intensity and severity of the symptoms. Clinically, she is having too many symptoms related to obsessive compulsive phenomena or disorder. So first line of strategy is to assess the intensity and severity. Then I will try to augment with an SSRI and psychological therapy. Two of the therapies that I mentioned to you, I mentioned the third one, behavioral activation therapy as well. All of these three strategies can be opted. Uh, Cognitive behavior therapy usually goes in obsessive compulsive disorders in patients like this who are chronic, relatively, history of 3 to 4 years with no remission in between, as reported by the patient. So I will still try to go for cognitive behavior therapy as my first line, in which I will go not only for the typical 9 to 12 session of 90 minutes each, I will try to go for at least 16 to 20 sessions over the period of next 15 weeks. So maybe bi-weekly initially and then weekly. And I will try to engage and involve the family members for the homework assignments, and I will also focus on her healthy lifestyle techniques like exercise, walking, yoga, along with the pharmacological intervention. And if I'll be able to get hold of a social worker, then I will try to assess the home environment and go for the interpersonal therapy as well. Okay, thank Right, you. sir. So, and sir, So can is you there please any role elaborate of that how important exposure are the and एक response? एक 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 वक्त में एक बोले, हाँ, जी फिर जी डॉक्टर पहले पहले बेनज़ीर आप करें, then I will. हाँ, नहीं बोले। आप बोले तो बात हो, आप बोले मैं इसके बाद बोलूँ। Is there any role of exposure and response prevention in this patient? Definitely, exposure and response prevention is one of the strategies that is opted in the beginning of the treatment. It has very good results. There are multiple research papers which shows that exposure and response prevention as a part of the psychological intervention gives a good outcome. Again, but however, I was not able to assess how much psychological intervention she received. This is the first line of strategy for OCD management when exposure and response prevention is given to the patient of OCD as soon as they are diagnosed. So I'm assuming that it was tried. How much and again, I don't know. So I will guess this is an important area and this should be tried once again as well. Okay, thank you, sir. Doctor, I wanted to ask that how important
Is it for a candidate to know about the recent advances? इस तरह के आप पूछ सकते हैं कि कोई एविडेंस आप बता दें या कोई रेफरेंस दे दें डॉक्टर साहब, इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है सर, नहीं पूछ समझ लेते आए, हैं थोड़ा सा स्पीकर के करीब बोलें, माइक्रोफोन के सर। सॉरी। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, थोड़ा सा जी नजदीक, अल्फाज थोड़े जी सर। मिंगल हो रहे हैं, फिर पूछिएगा। हेलो सर, जी जी। रीसेंट एडवांसेस जैसे कोई रेफरेंस पूछ सकते हैं वो कि आपने अगर ये बात कही है तो आप कोई भी चीज फॉर एग्जांपल ओसीडी से रिलेटेड तो आप कोई रेफरेंस बता दें। तो सर अगर इस तरह का क्वेश्चन वो मैं सुना कि अक्सर पूछ लेते हैं, इसमें फिर क्या करना चाहिए? Okay, so as far as the reference is concerned, I was quoting you whatever I have mentioned to you. I was quoting CanMed guidelines. They are Canadian medical guidelines, which were given by the Royal College of Psychiatrists of Canada as part of the treatment strategy. They focus more on optimal response to the patient. They focus more on exposure and response prevention, cognitive behavior therapy, and behavioral activation therapy. There is a Cochrane review that I mentioned to you regarding the effectiveness of the SSRI and augmentation strategies, which was published in 2019, which I mentioned to you earlier. I'm not able to unfortunately recall the precise name of the authors, but in 2019, a Cochrane review was published related to the treatment of OCD, which says that the first line treatment is SSRI. If the first line treatment fails, then we can try SNRI, specifically clomipramine and venlafaxine. Venlafaxine was considered there as number one and clomipramine number two. However, some of the prescribing guidelines recommend that clomipramine should be tried first and then we should go to SNRI. So I am giving you that reference. As far as the names of the references are concerned, I'm sorry, I'm not able to recall the names at this point in time. Names of the सर authors. आई थिंक ठीक है सर, सो वी कैन से दैट इस वक्त वो रिकॉल नहीं कर, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसी मैनू असेस करो, अपनी ना थ्योरी पेश करो। You have passed in flying colors. चलो मुझे पास सक्सेसफुल। ठीक है। Now I want all of you to defend yourself with the same tone and same theme. I want all of you to, when that you are presenting, nobody is perfect. Even if I am asked to present a long case, of course, ये hypothetical एक case मैंने बोला था, लेकिन दो चीजें याद रखें, अपने दिलों में दिमागों में घुसा लें कि एग्जामिनर आपके सर पे बैठा हुआ है, 45 मिनट घड़ी देख के आपके पास टाइम है मरीज के साथ। उन 45 मिनट में प्रैक्टिकली आप हर चीज नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है, और ये एग्जामिनर को भी पता है कि आप हर चीज नहीं कर सकते। सो मैंने 6 से 7 मिनट में मुझे फॉर्मुलेशन जो प्रेजेंट कर दी, तो एग्जामिनर मैंने इस कंसिडरेशन में की कि एग्जामिनर मेरे सर पे बैठे मुझे सुन रहे थे और वो देख रहे थे कि मैंने क्या क्या पूछा और क्या मिस किया। सो उन्होंने वो सवाल पूछे कि ये आपने किया और ये करना चाहिए था, और मैंने उसके जवाब दिए। बहुत सारी जगहों पे मुझे जवाब मिस हुए मेरे से, जैसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मुझसे मिस हुआ, लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा हाँ जी ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और मैंने ये ज्यूम किया है कि पास्ट ट्रीटमेंट में ये दी गई होगी, ऑल्दो कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। सो मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक बहाना तराश किया क्योंकि मैं भूल गया था। ठीक है, सो भूल जाने के चक्कर में आप एग्जामिनर को भी समझ आ जाती है कि लो जी गड़बड़ कर गया, भूल गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम में एंजाइटी होती है, और एग्जाम में जब आप इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप कुछ चीजें वाकई भूलते हैं। आपको अपने आप को डिफेंड करना है, सेव करना, और सेव करने के चक्कर में मैंने ये बहाना लगाया कि हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और मैंने ये ज्यूम किया कि ये हो चुका होगा, तो इसलिए मैंने इसकी बात नहीं की। अलग ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर को भी समझ आ जाती है कि ये चक्कर दे गए मुझे, लेकिन फाइन, वी हैव टू सेव आवरसेल्फ, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू गिव एन इंप्रेशन कि whatever we are doing is appropriate. So मैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भूल गया था, हालांकि मुझे बोलना चाहिए था।
लेकिन जब एग्जामिनर ने मुझे गोली चलाई तो मैंने उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस पर जवाब दिया। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू द सेम, कि जब एग्जामिनर आप पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगी, जी आपने ये नहीं पूछा, तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान वाला नहीं, मेरे वाला घबराना नहीं है, मेरे वाला घबराना नहीं है। और आपने एग्जामिनर अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसका कोई ऐसा जवाब देना है कि एग्जामिनर खामोश हो जाए, उस पर मजीद ट्रिगर ना हो। और अगर कोई एग्जामिनर ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और आपको आर्गुमेंट्स में ले आता है, जो कि आप लोग नहीं लेकर आए मुझे आर्गुमेंट्स में, मैं होता तो मैं जरूर कहता कि जी उस वक्त आपने, जब मैं आपके सामने बैठा हुआ था तो आपने तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स की बात ही नहीं की पेशेंट से, तो फिर मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए मजीद कुछ बहाने लगाने पड़ने थे। जैसे मैंने बहाना लगाया कि मैंने एज्यूम किया है कि वो 2 दफा हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी तो ऑप्ट की गई होगी। ठीक है, ये मैंने अपने आप को सेफ करने के लिए ये बहाना लगाया। सो आई वांट यू पीपल टू गो फॉर द सेम एज वेल। Save yourself in a way that examiner should not feel that you are going back foot or feeling anxious and worried or down हो गए, बल्कि आप ये शो करने की कोशिश करें कि एज अ साइकियाट्रिस्ट आई एम ट्राइंग टू डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। मरीज के साथ अटेंडेंट नहीं है, लवाकिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास तो सिर्फ मरीज का वर्बैटम ही है ना, जो मैंने 45 मिनट में जो कुछ हो सकता था पूछा है। 45 मिनट में चुप तो मैं नहीं किया ना, मरीज से बात करता रहा हूं। और एज अगेन आप सारे FCPS के ट्रेनीज हैं, जब आपको एक एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट दिया जाएगा तो आई एम श्योर 45 मिनट आपको लगेगा बहुत थोड़े हैं, बड़ी तेजी से गुजर गए। वो इसलिए तेजी से गुजर गए क्योंकि आप मरीज से मुसलसल इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें आप मिस करेंगे और भूलेंगे। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। यस सर। ओके, पास हो गया कि सर? फेल हो गया? हाँ सर जैसे आज एक मुझे टास्क दिया गया था ड्यूरिंग माय आवर्स कि आप एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल XYZ आपके सामने है कोई भी पेशेंट, तो आपको कहा गया टास्क ये दिया गया असेस द ऑब्सेशंस इन दिस पेशेंट। सर आप कैसे प्रोसीड करेंगे? असेस व्हाट? ऑब्सेशंस, बस ये टास्क है। एक XYZ अच्छा, पेशेंट आपके सामने, अगर आपके पास शॉर्ट केस में या वही बात के अगेन ऑस्की में ये सवाल आता है, तो ऑब्वियसली आपको ऑब्सेशन असेस करने। सो यू स्टार्ट विद द सेम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो हमारे एग्जामिनर्स हैं, सीनियर हैं, और ये लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे आपसे आपकी बीमारी और इलाज मुआवजे के बारे में कोई बातचीत करनी है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। मुझे बताया गया है कि आपको कुछ ऐसी सोचें आती हैं जो आप समझते हैं कि गलत हैं और नहीं आनी चाहिए, क्या मजीद तफसील मुझे उसकी बताएंगे आप? So you can start from there, and if the patient starts talking कि हाँ जी मुझे सोचें आती हैं, बार बार आती हैं, तो आपने वो डेफिनेशन ऑफ सेशन की कंफर्म करनी है। A thought which is again patient owns the thought, it is their own mind, a thought of their own mind, they want to resist it, but unfortunately when they resist it they get anxiety symptoms, so they do certain acts or phenomena to reduce their anxiety. So जो ऑब्सेशन की डेफिनेशन है कि थॉट, इमेज, इम्पल्स और वो फिनोमेना जिसको पेशेंट ओन करता है, उसको रेजिस्ट करता है, वो उसकी मर्जी के खिलाफ आती हैं, और उसको पता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी बार बार आती है। वो डेफिनेशन आपने पहले उसकी कंफर्म करनी। जब एक दफा आपको डेफिनेशन में कंफर्मेशन मिल जाती है कि ओके दीज आर ऑब्सेशनल थॉट्स, then you have to ask for the other obsessions like obsessive rituals or obsessive compulsions or obsessive thoughts, images, impulses, वो सारी चीजों को रूल आउट करना है। सो आपके पास 7 मिनट में खाली ऑब्सेशंस को असेस करने के लिए टाइम थोड़ा है। अगर तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 6-7 मिनट में आप कुछ यही काम कर पाएंगे जो मैंने आपको बताया। शायद आप पूरा टास्क ना कंपेयर कर पाए, विच इज फाइन, बिकॉज अगेन एग्जामिनर्स नो कि आप एक फ्लुएंसी में चल रहे हैं। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उससे ऑब्सेशंस की डेफिनेशन कंफर्म की, ऑब्सेशनल थॉट्स कंफर्म किए, फिर आपने इमेजेस और बाकी सारी चीजों को पूछा, रूमिनेशंस को पूछा।
सो अगर आपने वो 5 6 7 चीजें कर ली हैं और उसके बावजूद टास्क कंप्लीट हुआ, दैट्स फाइन. Got it? Sir, the question is that are we supposed when I started with the basic criteria कि मैं पहले obsession ही हैं भी कि नहीं, repeated हैं, unwanted है, intrusive है, मैंने पहले ये पूछा Mr. XYZ को. So they were like, you are asked to assess the obsessions. We have told you that it's a patient of OCD. Why are you making again confirm that इनको OCD है भी कि नहीं, obsession ही है कि नहीं? आपको task दिया कि obsession assess करें. तो उस पे अच्छी खासी मेरी सर हुई. अच्छा, उसमें बात फिर वो ये कि डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितना नास्टी है. अगर मुझे कहा जाए कि जी दिस इज द पेशेंट एंड यू हैव टू आस्क द ऑब्सेशंस, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू. अगर आपको वो कहते हैं दिस इज द डायग्नोस्ड पेशेंट्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे मेरी फॉर्मुलेशन में मैंने बोला कि दिस इज द डायग्नोस्ड पेशेंट ऑफ ओसीडी, assess his obsession, right? Even then I will start from the definition कि ये obsessions हैं कि नहीं हैं. So वो जो आपने बात की थी मैं तो उस पर एग्री करूंगा. पहले आपको ये देखना है कि ये obsessional phenomena है कि नहीं, फिर मुझे OCD के उसके थॉट्स को सारों को असेस करना है. थॉट्स हैं, impulses हैं, ruminations हैं. एक्चुअली सवाल उनका गलत था. उनको ये सवाल करना चाहिए था, दिस इज अ डायग्नोस्ड पेशेंट ऑफ ओसीडी, यू हैव टू असेस ऑल द ऑब्सेशनल फिनोमेना इन हिम. फिर आप थॉट्स, इंपल्सेस, इमेजेस और वो सारी चीजें असेस करते. लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि ही इज अ डायग्नोस्ड पेशेंट ऑफ ओसीडी, असेस ऑब्सेशंस, तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल गलत है. सो मैं तो फिर यही अज्यूम करूंगा कि ऑब्सेशन से ही पूछना है. सो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट. अगर वो ऑब्सेशनल फिनोमेना पूछना चाहते कि दिस इज अ डायग्नोस्ड पेशेंट ऑफ ओसीडी, ही इज हैविंग ऑब्सेशनल थॉट्स, असेस अदर ऑब्सेशनल फिनोमेना इन दिस पेशेंट, फिर आप बाकी सारे पूछेंगे, फिर आपको पूछेंगे. लेकिन शुरू आप वहीं से करेंगे जो आपको सोचें आती हैं वो किस किस्म की आती हैं, उन सोचों से में क्या रेलेवेंस है, आप उसको इंट्रूसिव हैं, आप उसको ओन करते हैं, आप उसको रेजिस्ट करते हैं, जो 5 क्राइटेरिया है ओसीडी का. फिर आप वो उसके साथ रिलेटेड पूछेंगे. लेकिन बेनजीर बहुत डिपेंडेंट है सवाल पे. एफसीपीएस में कोशिश की जाती है कि जो वेग क्वेश्चनिंग है वो अवॉइड की जाए. ऐसी क्वेश्चनिंग जिसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आ सकते हो वो आमतौर पे एफसीपीएस में नहीं पूछते. ठीक है, एक बिल्कुल कोल्ड टारगेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जी. अगर कैंडिडेट को वो क्वेश्चन समझ आए तो बल्ले बल्ले, ना समझ आए तो प्रॉब्लम. वेग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. मुझे अगर कोई कहेगा जी ऑब्सेशनल फिनोमेना इलिसिट करें तो मैं तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करूंगा. So you have to be very precise. What examiners को कैंडिडेट केयर को बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि उनके पास की अवेलेबल होती है. सो सवाल होता है और की होती है. लेकिन अगर वो आपको वैसे ही तंग करना चाहते हैं तो तंग तो फिर किसी को भी कर सकते हैं, आप मुझे भी कर सकते हैं कि मैंने एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मैंने भूल गया सी, तो क्यों भूल गया सी, तेरी माँ दी तेरी भैन दी, आई एम सॉरी टू से. बट अगर आप छेड़ना चाहें तो आप छेड़ दें. यूजुअली कोई एग्जामिनर ऐसे नहीं करता. मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में एफसीपीएस में बड़ी क्लियर है, बड़े स्पेसिफिक सवाल होते हैं, उनके स्पेसिफिक टारगेटेड जवाब होते हैं क्योंकि सबको पता है वहां पे टाइम बार्ड सिचुएशन है. शॉर्ट केसेस में, लॉन्ग केसेस में, इवन लॉन्ग केसेस भी टाइम बार्ड है ना. 45 मिनट मरीज के साथ हैं, 15 मिनट आपको लिखने के लिए दिए जा रहे हैं, 1 घंटा, और उसके बाद फिर आप उसमें सुनाएंगे और फिर एग्जामिनर्स ने आधा आधा घंटा आपसे सवाल पूछने हैं, 20-15 मिनट. सो वो सारी टाइम बार्ड सिचुएशन. कुछ लोग तेज बोलते हैं जैसे मैं तेज बोलता हूँ, कुछ लोग आहिस्ता बोलते हैं. जो आहिस्ता बोलते हैं नेवर मीन्स कि वो गलत बोल रहे हैं. उनका अपना एक स्टाइल है, वो फ्लो में अगर चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो ठीक है. सो एग्जाम बहुत फोकस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है. सारे एग्जाम चाहे वो एफसीपीएस हो, चाहे यहाँ पे रॉयल कॉलेज का इम्तिहान हो, सारे फोकस्ड होते हैं. वेग क्वेश्चनिंग नहीं होती. हाँ, वार्ड में बैठे हुए हम वेग क्वेश्चंस करते हैं
फिर हम कैंडिडेट्स को रिडिक्यूल भी करते हैं, ठीक है। रिडिक्यूल करने में अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इम्तिहान से 6 महीने पहले कैंडिडेट मेरे पास आए तो मैं उसको रिडिक्यूल कर सकता हूँ ताकि वो तैयारी अच्छी करे। लेकिन अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम के आखिरी 3 हफ्ते में मेरे पास आ रहा है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे बिल्कुल फोकस्ड होके उसको इंकरेजमेंट करके एनहांस करना है। ये तुम लोगों के बिल्कुल। फ्यूचर के लिए भी जरूरी है, याद रखना। अपने आने वालों को इस तरह तंग ना करना। हाँ बताओ, वरना फिर अगेन मैंने 52 FCPS पैदा किए, मैं चाहता हूँ तुम सारे भी 50-50 पैदा करो। सो अगर करने हैं तो बिल्कुल फोकस्ड चलना पड़ेगा। बोलो। सर द क्वेश्चन इज कि इससे जो XYZ एग्जामिनर से उन्हें मेरे सवाल भी पसंद नहीं है, हालांकि हमेशा से OCD के लिए यही बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे आते थे। सो मैं ये सुनना चाह रही, ये मैंने जो एक दो नोट्स कंसल्ट करती हूँ वहां भी यही क्वेश्चंस पड़े थे। सो आप लोग कैसे कैसे पूछते हैं? शायद ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस पॉइंट पे पूछना, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें कोई मतलब मैं इसको नहीं समझती कि ये गलत है पूछना, कि बीइंग बिल्कुल फाइनल ईयर देखो में जी, और एक कैंडिडेट चीज हो को मेरे फिर क्वेश्चन याद पढ़ेंगे। रखना, एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट, सो यू कैन नॉट चैलेंज द एग्जामिनर। उसके हाथ में कलम है जो आपको पास या फेल कर सकता है। एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट। लेकिन मैं फिर बात करूंगा, FCPS का एग्जाम्स बहुत स्ट्रक्चर्ड है। उसमें जितने सवाल पूछे जाते हैं कैंडिडेट से वो फॉर्मेटेड सवाल होते हैं। वो उस दिन नहीं बनाए जाते या एक्सटेम्पोर नहीं बनाए जाते जैसे मैंने एक्सटेम्पोर एक हिस्ट्री प्रेजेंट की है। नो, वो सवाल पीछे बनते हैं, वो एवेलुएट होते हैं और वो फिर एग्जामिनर्स तक पहुंचते हैं। सो मैं एज एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल मेरा नहीं है, वो पीछे 4 एग्जामिनर्स ने बैठ के बनाया है और मैं कैंडिडेट से पूछ रहा हूं। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है। आप इसको ये ना कंसिडर करें कि ये हवाई घोड़ा है, हवाई घोड़ा नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड एग्जाम है। हाँ, उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड एग्जाम में कुछ इफ एंड बट हो जाती है, बट मेजॉरिटी में नहीं होती। वहां पे एग्जामिनर अपनी मर्जी से आपको ऐड नहीं कर सकता सवाल। शायद एक दो केसेस में यस, अगर कैंडिडेट को मैंने इंकरेजमेंट करनी हो, उसको बूस्ट देना हो तो मैं यस, या कैंडिडेट बिल्कुल फेल हो रहा हो तो मैं यस कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कर दूं। मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। मेरे पास सवाल है, मेरे पास की है, वो सवालों के जवाब दे रहा है, मैं की को टिक कर रहा हूँ और मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। बहुत फॉर्मेटेड है। जब हम FCPS का हमने इम्तिहान दिया था इतना फॉर्मेटेड नहीं था। उस वक्त हमारे सर पे 12 एग्जामिनर बैठे होते थे और हर बंदा अपनी मर्जी से सवाल पूछता। अच्छा मुझे बताओ असाइलम की डेफिनेशन क्या है, अच्छा मुझे बताओ स्किज़ोफ्रेनिया में, रेजिस्टेंट केस में, कैटाटोनिया में लोराजिपैम का जो रोल है उसके आप पेपर का नाम बताओ। सो उस वक्त बहुत रैंडम और हैफेजर्ड सवाल होते थे। उस सिस्टम को इसीलिए चेंज करके अब ये सिस्टम आया है और पूरी दुनिया में आया है, और ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड सवाल है। ठीक है, इम्तिहान है। जी मानूर, सवाल है आपका, पूछें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो OCD का केस प्रेजेंट कर रहे थे इसमें एक क्वेश्चन था कि किसी ने मेरे से पूछा था कि OCD में SSRIs को इफेक्ट आते आते कितना टाइम लगता है, SSRIs से रिस्पॉन्स आते आते कितना टाइम लगता है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होता है? ओके, SSRIs का रिस्पॉन्स OCD में हो या डिप्रेशन में हो सेम है। Usually it is said to be when you achieve a therapeutic targeted level of the medication, then 3 weeks on that dosage. So OCD में usually it is said that a higher dosage of an SSRI is required. So आमतौर पे fluoxetine goes up to 60 to 80 milligrams per day. Sertraline, you have to go up to 200 to 300 milligrams per day. Fluoxamine, usually 100 to 200 milligrams per day, and sometimes up to 300 milligrams per day as well. When you achieve the maximum tolerable dose, 3 weeks from now, then
the therapeutic effect of the medication comes in. There is no if and but to it. And all the studies are of the same opinion. So we start an SSRI, we try to reach to an optimal, minimal, tolerable dose, wait for 3 weeks, then we push up the dose to maximum tolerable dose, wait for 3 weeks, and in some cases, because obsessive OCD is a chronic phenomena, in some cases we can wait up to 6 weeks, but 3 to 6 weeks is the time. And then I have to move forward. Okay, sir. Thank you. You're welcome. और बस सवाल खत्म हो गए? जी सर। ओके, अब अगर सवाल खत्म हो गए तो फिर अगला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम डॉक्टर मारूफ। सर क्वेश्चन ये डॉक्टर बेनजीर ने भी शायद आपसे पूछा था, लेकिन वो आपने अदर वे राउंड, असल में आप उस वक्त पेशेंट बने हुए, वो कैंडिडेट बने हुए थे, इसलिए बोला। सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने जैसे रेफरेंसेस कोट किए फॉर ईसीटी, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कितने रेफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें हर चीज़ का रेफरेंस और एग्जाम सिचुएशन में हम एकदम कोट कर सकें। किससे बात कर रही हूँ? मैं इस मामले में सबसे कमजोर इंसान हूँ। मुझे बंदों के नाम नहीं याद रहते, मुझे साल नहीं याद रहते। मैंने एब्स्ट्रैक्ट्स, हर बीमारी के 5 एब्स्ट्रैक्ट्स निकाले थे जो मैंने तैयारी की थी। सो स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट के 5 रेफरेंसेस, 5 एब्स्ट्रैक्ट्स जाहिर है, इनके टाइटल और रेफरेंसेस सालों के। ओसीडी का भी इसी तरह, डिप्रेशन का भी इसी तरह, डिसोसिएटिव का। सो हर एक के 5-5 निकाल के उनको रटे मारने की कोशिश की थी, और इम्तिहान में जाके मैं फिर नाम और साल भूल गया था। इसमें मारूफ ये याद रखना कि एग्जामिनर्स जो हैं उनके पास जो बहुत ही हिस्टोरिकल किस्म के पेपर्स हैं वो आमतौर पे की में मेंशन होते हैं। जनरली स्पीकिंग जैसे एपीए गाइडलाइंस हैं या मूड्सले गाइडलाइंस हैं या नाइस गाइडलाइंस हैं, ये स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नाइस गाइडलाइन या मूड्सले या एपीए, जो कि तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप तीनों को असेस करें तो तीनों में तकरीबन 19-20 का फर्क होता है। जनरली बाकी सारी दवाइयां सेम होती हैं, या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में भी जो स्टैंडर्ड है तकरीबन सेम है। कोई एक याद कर लें, तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एपीए की गाइडलाइन पसंद है, जो कि आसान है, मैंने वही की हुई है, तो वो बेहतर है। उसको आसान को आप थोड़ा सा रिव्यू कर लें। जब वो आपसे रेफरेंस मांगे किसी ऐसी चीज का, मसलन रोल ऑफ ईसीटी इन ओसीडी, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कॉकरेन रिव्यू एक मेटा एनालिसिस, सो मुझे नाम तो याद नहीं थे, ठीक है, मुझे उसका ये याद है कि हाँ 2019 में एक कॉकरेन रिव्यू छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईसीटी का रोल जो है वो ऑगमेंटेशन स्ट्रैटेजी में यूज किया जा सकता है, बट आफ्टर द ट्रायल ऑफ एन एसएसआरआई, उससे पहले आप ईसीटी नहीं देते। कि फर्स्ट लाइन में ईसीटी रिकमेंडेड नहीं है ओसीडी में कहीं पे भी, अनलेस और अनटिल ऑब्वियसली पेशेंट सुसाइडल हो जाए। सो वो तो कोमॉर्बिडिटी आ गई एमडीडी के साथ। सो रेफरेंसेस की जो बात है वो उसमें फिर वही कहूंगा कि बेसिक रेफरेंसेस आपको इतने आने चाहिए कि आप एग्जामिनर को जवाब दे सकें कुछ लेवल तक। वो नहीं, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सारे नामों के साथ, पूरे पूरे सनों के साथ, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री के सारे रेफरेंसेस याद होंगे, नहीं। लेकिन अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ हो, आपकी नज़र से गुजरा हुआ हो, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि जी हमने ये जनरल क्लब हर वार्ड में कराने का मकसद ये होता है। कैंडिडेट्स को वैल्यू नहीं करते, लेकिन इसकी वैल्यू है। यहाँ पे भी जनरल क्लब होता है तो उसमें यही होता है कि एक टाइटल के साथ एक आर्टिकल प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो आपके रेफरेंस के लिए याद कर लें आप, ठीक है। रोल ऑफ ईसीटी इन ओसीडी, रोल ऑफ ईसीटी इन कैटाटोनिया, role of antipsychotics in the treatment of psychosis, role of antipsychotics in the treatment of monosymptomatic hypochondriacal delusional disorder. ये टॉपिक जनरली जनरल क्लब्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक आधा कोई आप
जो आप रूटीन में 4 साल में पढ़ रहे हैं उसको अपने हिस्सा बना लें और उसको एक आध दफा देख लें. दैट इज इनफ. None of the examiners will expect you to give the precise reference of the year. अब कुछ स्टडीज ऐसी जो आप नहीं उसको अवॉइड कर सकते. जैसे हमारे जमाने में आज से 9 साल पहले केटी स्टडी आई थी एक. अब वो एक ब्रेक थ्रू स्टडी थी एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के हवाले से. अमेरिका की बहुत बड़ी स्टडी थी केटी स्टडी. और केटी स्टडी बहुत पूछी जाती थी एग्जाम में, इसलिए कि वो केटी एक गोल्ड स्टैंडर्ड किस्म की स्टडी कंसिडर हुई इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी साइकोटिक्स इन स्किज़ोफ्रेनिया ऑफ कोर्स एंड सम अदर रिलेटेड डिसऑर्डर. फिर एक डिप्रेशन की स्टडी आई स्टार डी. वो भी एक ब्रेक थ्रू स्टडी थी जो बहुत पॉपुलर हुई, फेमस हुई, हर जगह कोट हुई. इस तरह की जो ब्रेक थ्रू स्टडीज हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आती होंगी. ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई मसला नहीं. सो मोटी मोटी मेजर स्टडीज जो करंटली मशहूर हों वो देख लें. एक एक स्टडी हर बीमारी के हवाले से कुछ थोड़ा सा देख लें और उसी को कोट कर दें. दैट विल बी एक्सेप्टेड. ओके सर, थैंक यू सर. यू आर वेलकम. हाँ जी, सर, बेबी. डॉक्टर मानूर वाला क्वेश्चन जो डॉक्टर मानूर ने क्वेश्चन पूछा है, सिंस आई वाज आल्सो देयर, तो मुझे जवाब उसका समझ नहीं आया. मुझे वो बार बार पूछने लगे लाइक डॉक्टर मानूर से भी कि इसका ड्यूरेशन बताएं. ड्यूरेशन मेरे ज़हन में तो वही आया था कि जो ऐसे आ रहा है इसका पीरियड होता है कि जब वो खुद से वो करती हैं एक्शन, लेकिन देयर वाज नो कि नहीं, ये नहीं है इसका आंसर. ड्यूरेशन क्या होगा? एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछ रहे थे मैंने. Exact duration 3 to 6 weeks on a specific dosage. ओके ओके. ठीक है. और जी सर, बस यही क्वेश्चन से जिनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी. अच्छा सर, अब एक और क्वेश्चन था कि जिसपे सबको उसका आंसर नहीं निकल पाया. अब जैसे एक तो है सर आपका एक्सपीरियंस ना, सिंस यू बीन वर्किंग सिंस आई थिंक आपने 98 बताया था, तब से यू बीन वर्किंग ना, तो जब से आप साइकियाट्रिस्ट हैं. तो सर एक होता है कि मॉड्यूलर में आजकल क्या चल रहा है या ये वाली गाइडलाइंस क्या कहती हैं. अब अगर कोई फिजिशियन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कोई मेडिकेशन देता है, तो वो हमारे एक कॉलीग हैं, उन्होंने कह दिया कि जी आपने ये कैसे दे दिया है, जबकि वो ड्रग कॉमनली दी भी जाती है. फॉर एग्जांपल ओलेंजापिन ओसीडी में ये लोग दे रहे थे ऑगमेंट करने के लिए जो भी. उन्होंने कहा कि जी इसका क्या रैशनल है, मॉडल में तो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन में एरिट्रोजोल है या हेलोपेरिडोल है या कुटायापिन का जिक्र है, तो आपने क्यों दिया ओलेंजापिन. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन हैं कि जो एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट हैं अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कोई मेडिसिन जो कि गाइडलाइंस में नहीं है, तो फिर उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो जस्टिफाई नहीं हो सकते. हम एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन की बात करते हैं. पूरी दुनिया में साइकियाट्री में एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती हैं. पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर इनसिग्निफिकेंट. दे आर ऑफ यूजलेस, ऑफ नो वैल्यू. मैं ये कहता हूं कि जी बेनज़ीर को ईसीटी लगा दें क्योंकि ये एफसीपीएस का केस प्रेजेंट कर रही है. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें बायस्ड है, ये वैलिड नहीं है. सो अगर कोई ओलेंजापिन दे रहा है ओसीडी में एज फर्स्ट लाइन जबकि गाइडलाइंस में वो मेंशन नहीं है तो गलत है. उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. आपको एविडेंस बेस्ड ही चलना है. वैसे ओलेंजापिन मेंशन्ड है 2 गाइडलाइंस में, सारियों में नहीं, 2 में है. ठीक. सो अगर तो आप रेफरेंस कोट कर सकते हैं मूर्जले का, एपीए का, नाइस का, या जो भी गाइडलाइन यूरोपियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की है, कॉलेज ऑफ न्यूरो फार्माकोलॉजिकम ऑस्ट्रेलिया वालों का है, उनका रेफरेंस है. सो अगर आप कोट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप कोट नहीं कर सकते फिर कोई वैलिड नहीं, फिर वो बेकार है, कोई नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं. अगर मैं आपको रेफरेंसेस 2 कोट कर सकता हूँ, ये 2 रेफरेंसेस हैं, फाइन. अगर मैं रेफरेंसेस कोट नहीं कर सकता, नो, नॉट एक्सेप्टेड. जी सर. ठीक है. और जी सर, थैंक यू सर.
सर You're कुछ भी नहीं, मैंने welcome. वैसे एक ड्रग उसका केस तैयार किया था, बाकी आप देख लें, इट्स बीन एन आवर जिस तरह आप कहते हैं सर। अच्छा, अब घंटा तो इसी में गुजर गया। मेरा ख्याल था कि मैं 15 मिनट करूंगा और तुम लोग मुझसे सवाल जवाब पूछोगे और 15-20 मिनट के बाद हम एक केस कर लेंगे। अब तुम अगले सेशन के लिए 3 केस तैयार करवाओ और हम कोशिश करेंगे कि वेंसडे को या फ्राइडे को तीनों केसेस कर जी लें। ठीक ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू चलो सर। आज के लिए इतना काफी है अगर हजम हो गया। जी ठीक जी है, जी, थैंक यू ये सर। कैंडिडेट पास हुआ या फेल हुआ ये तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, लेकिन केस प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, थैंक यू वो सो मच सर, थैंक यू सर। मामा की आवाज आ गई है, वो कह रहा है बस करें आप। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?